Hello, everyone. Once again, I welcome you all to Career in Pharma. So, today we have a special guest with us, and Amandeep. We have Amandeep with us, and Amandeep completed his B.Pharmacy Bachelor in Pharmacy in 2011. After that, he worked as pharmacist into some corporate hospital, and also he served into Indian Army for around 4 years. And after that, he did post graduation in biotechnology, M.Sc Biotechnology he did, and currently he is in a medical writer role in a renowned MNC. So let's begin with Dr. Amandeep's journey, and let's hear the whole journey with Amandeep's words only, on his own words. I am Dr. Neema Bisht, BDS by degree and a pharma professional. Also, I am founder of Career in Pharma, wherein I provide guidance and training to healthcare professionals. I am on a mission to help 1 lakh healthcare professionals to attain financial security through career into clinical research industry. So once again, hello Amandeep. I welcome you to Career in Pharma. And before beginning the session, I would like to say thanks to to coming to this channel and deciding for giving your journey and your learning and sharing part to my audience. And once again, thanks a lot, because it's weekend, and weekend is all tightly packed, especially for married and kids all are there. So once again, thank you, Aman. Hi everyone. Thanks a lot to Nima. I think so. Not from my side, even from the audience side, I would like to say thanks, because you think about to promote the pharmacovigilance product to enhance the paramedical status. I can say so. Firstly, I want to say thanks, and yes, it's somewhat hectic for a married people to come on Saturday, but Yes, I can say thanks to the PV now, because after 10 years long, after I got a Saturday holiday. So this correct, is this is very difficult for me. As you know, in the medical profession, there is no weekends, no festivals. correct. We respect the HCPs, but I can say thanks to the PV9 now. So I would be here on Saturday. Okay, okay, great, great. So Amandeep, I was just going through your profile in LinkedIn, and I saw like you have so much of variety in your profile in terms of a graduation, post graduation, and then in a job also. No, you were into corporate hospital. Then you served in Indian Army. That is, top thing. Like it's a dream for many actually to serve in Indian Army. But one question I had, that why you left your job, Indian Army job. The thing was that actually I would firstly want to say thanks to Almighty, because there are things we dream. It's because the things we are thinking so, and we are not getting the thing. They will become our dreams. And Yes. by firstly, I want thanks to my parents and to Almighty, because of their support and all the things, cover up my dreams actually. So if I can say my brief intro, you have introduced me well actually. I did my B.Pharma in 2011. Mm-hmm. Then I started working in MNC as a marketing. Then I shifted to the corporate hospital, renowned hospital. Worked there for 2.5 years. There was a dream that I have to do something. I have to Mm-hmm. do something. I'm doing first serving the patients and all the things, but there is a thing residing bad in your mind. What you are doing special. Mm-hmm. So I got opportunity to serve Indian Army veterans. So that was a lucky dreams come true kind of thing. I joined Indian Army as a pharmacist, as a medical store in charge in 2014. I Okay. served there for up to 2018. In the meanwhile, I got married, and the sorry point was that my father left me in 2017. So I was thinking so to pursue my masters. I did my masters also in MBA also in Mm-hmm. 2014. I Mm-hmm. completed in 2014. It was a distance MBA only. So there is a dream to do the masters regular.
So when I got married and with kids, it actually become a not fulfillable dream. I started like thinking like that. I will see the dream in my child only. So uh, that was very difficult part for me to left the job actually. I seriously give whole credit to my mom and to my wife actually. I've told my wife she's working in central government. So one day they decided that he's doing something. Basic part, everybody know the family knows you how much roots and how much caliber you have actually. So they both decided and make that mission. And one day come to me, यार ये ले जी ले अपनी जिंदगी. What was the thing was it was seriously surprise kind of thing for me. So it was very difficult for me. I know the date even 4th September 2018. Oh, great. So I can't even to sleep that night. It was difficult for me because the thing was that I was doing job in army. Hmm. Still there was a thing that I can do better. Hmm. So that was very difficult for me. So I decided on 5th September, I gave notice and my Hmm. colonel stopped me even. My colonel told Hmm. me, don't go, Aman, don't go, Aman, you will be difficult. Then I seriously, I don't regret him even because the thing was that I was also not knowing what will be, I will be here, where I will stand. Hmm. So I told him that, sir, you are right. You have Hmm. lot of experience. He's the best colonel I have. Hmm. So, but I told him, my sir, I have a support of my mother. My mother Hmm. told me to do that, so I will go with have it ahead with that. And now I achieved that. Hmm. Seriously, which Great. achievement kind of because the thing was that I am a medical writer. Okay, Hmm. many of the people are working as a medical writer, Hmm. but when the thing come to be as a dream, no? Dream, Hmm. so it will come true. It will something special for you. It's Hmm. something special for you. And I have completed my master in 2020. The COVID period was going on. Still, with kids and your wife and mother, you have to stay home and you have to go college, not earning anything. Hmm. This is something I have gone through the period. But now I get the flowers of nourishment Hmm. of my part. So I can say it was difficult. It was Hmm. difficult to left the job, but now I can say it was Very good. happy. So, from your whatever you mentioned just now, one thing is for sure, in life, if you have to, achieve your dreams, or if you want something and you want to achieve it, then you have to take risk. Yes, अभी yes, अमनदीप के केस में ही लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब. मतलब yes. गवर्नमेंट जॉब अभी भी वो माइंडसेट है ना कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो सब सेट हो गया वाला. But you हाँ. left that job actually, and I mean, with the support of your wife and mother, you did all the things greatly. ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेने वाली चीज है एक्चुअली. मैं इसका क्रेडिट ये भी देता हूँ कि हम्म. बिकॉज आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब बिफोर माई मैरिज तो हम्म. बिफोर माई मैरिज आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब but my wife she is also working in government, so I got her support that because we are Yes. going to government job because the security kind of thing. So Correct. I have that security. I can say हम्म. in a in any prospect I can say I was हम्म. secure. That's why I took that decision actually. So बट it was स्टिल अमनदीप, व्हाट आई थिंक ना, सिक्योरिटी पार्ट इज देयर, लाइक या yes, एक और है गवर्नमेंट जॉब में, बट आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकले नहीं तो क्या है, आर्मी में आप आराम से कर रहे हैं बहुत. मतलब सही है क्या, कंफर्ट जोन से क्या बाहर निकलते हैं आप, राइट? वो करते हाँ, रहते हैं. एक कंफर्ट जोन भी था। एक चीज में आप 7 साल लगा के एक जगह पर पहुंच जाते हो। सबसे मुश्किल बात थी कि उसके बाद दोबारा एक नई चीज को सीखना शुरू कर। एग्जैक्टली. वो सबसे सबसे डिफिकल्ट पार्ट था मेरा। तो हम्म. वो उस चीज को अचीव करना, उस चीज को जाना, मतलब कि कॉलेज आपको रोज जाना, फिर आपको कुछ मेरे टीचर्स भी मेरे से छोटे थे। तो मेरी क्लास तो आई वाज द सीनियर वन इन क्लास, मतलब कि 7 और 8 इयर्स का गैप था मेरा और स्टूडेंट्स में। मतलब कि हैट्स ऑफ टू माय टीचर्स, हैट्स ऑफ टू माय कलीग्स, दे सपोर्टेड मी वेल। उनको पता था कि नहीं यार इसका बेटा भी है। मतलब कि आई वांट टू शेयर वन इंसिडेंस जो मैं कभी हम्म. भूल नहीं सकता। मेरा इंसिडेंस था, आई वाज इन सेकंड सेमेस्टर
और my wife was conceiving 9 months that time. हम्म So that was the day doctor has given us कि you have to prepare on that day. और मेरा हम्म लास्ट एग्जाम था उस दिन. हम्म मैंने टीचर को कहा कि मैम आप मेरा फोन रख लीजिए प्लीज, इसको मैं फोन बंद नहीं कर सकता इस 3 घंटे, आप मेरा फोन साइलेंट पे रख लीजिए. मैंने वाइफ का नाम बताया कि अगर इस नाम से आपको फोन आता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा. तो मतलब कि वो टाइम निकला. अभी भी मैं वो 3 घंटे भूल नहीं पाता कि मैंने वो हम्म 3 घंटे कैसे निकाले. कि मुझे था कि यार आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू माई वाइफ और कुछ भी हो सकता है, मुझे लेके जाना है, करना है. तो वो टाइम निकल गया. उस रात मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ एंड आई बिकम डैड एट दैट नाइट. तो सीक्रेट वो चीजें थी ना मेरी जो कॉलेज की, मतलब कि सीरियसली अब ये मुझे कहता है क्या है कि यार, मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि जिस जर्नी से मैं आके अब यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ. हम्म और एक और बात जब हुई, आई गॉट अ जॉब इन पीवी एंड वेरी हम्म renowned company. I would like to say thanks to the company, LMs also who chosen me. And after that I got that, yeah, I was working as a medical writer and get to know that this is the dream of the PV person. So यस I can't say nothing. I was thinking so कि यार कि हाँ, अगर आप कुछ मेहनत कभी करते हो तो हम्म ठीक है, वो आपका टाइम वो मुश्किल हो जाता है. शायद आपको ऐसा लगता है कि 1 साल भी आपका मतलब कि 10 साल जैसे लगता है, वो एक दिन-दिन भी साल के जैसे लगता है. हाँ, बट आप जब उस अचीवमेंट के आ जाते हो, उस चीज़ पे आ जाते हो, तो उसमें मज़ा करने काम करने का जो मज़ा ही है ना, वो हम्म आप डिफाइन नहीं कर सकते. उस चीज़ में यू कांट से, मतलब कि आप कुछ कह ही नहीं सकते उस चीज़ में. हम्म और मैं कहता हूँ कि हाँ, आर्मी में मेरे पास मतलब कि 4 साल मैं आर्मी में रहा. तो वेटरन्स थे, मतलब कि मैं कहता हूँ कि नहीं, आई ब्लेस्ड विद देम. मतलब कि सीरियसली देयर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स दे हैव गिवन मी. तो वो भी मुझे कह देते होते थे कि नहीं यार, आप ठीक है, तू यहाँ पर है, अच्छा है, बट तू कुछ हम्म बड़ा कर सकता है. तो दैट वाज जो था ना, एक पुश मिल जाता था. वो कहते हाँ थे कि हाँ यार, तू हमारी हेल्प कर रहा है, बड़ा अच्छा है, बट नहीं, तू कुछ और कर सकता है. वो हाँ ये चीज कह देते थे. तो वन ऑफ माई कर्नल, आई वुड लव टू से हिज नेम एक्चुअली, कर्नल रवि रवि दीवान. तो ओके मतलब कि उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे अपने आर्मी करियर में, क्योंकि आर्मी में स्टेबल होना इट्स समथिंग. हम्म उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे आर्मी छोड़ने के बाद. हम्म आर्मी छोड़ने के बाद भी अभी भी तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार अमन, तू, मैं तुझे देख रहा हूँ कि तू कहाँ पर खड़े जाएगा, मुझे नहीं, तू नहीं सोच सकता अपने आप को. तो वो एक जो चीज थी ना उनकी, मैं कभी भूल नहीं पाता उसको. हम्म वो अभी भी याद आती है कि हाँ यार, उस बंदे ने जो सपोर्ट दिया ना, तो वो आज कुछ है. और आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आपके अगल बगल उस वक्त ऐसा सपोर्ट आपको मिला, और मुझे लगता है आपसे ज्यादा बाकी लोगों को आप पे ज्यादा ट्रस्ट था, एक था यस कि आई ये कैन. कुछ तो करेगा बड़ा. हाँ, मेरे डॉक्टर थे आर्मी में, मेरे डॉक्टर थे, वो मेरे हम्म साथ जाते थे. ये बात है 2014 हम्म 2014 की. He insisted me to start MBBS again. वो मुझे ओके सुबह कहते हैं कि she came to me कि अमन, this kind of thing, she take help from me, she can't hesitate. हम्म I respect her. उसने कभी हेजिटेट नहीं किया कि नहीं यार, ये बंदा फार्मा सिस्टम है, इससे पूछ रही हूँ, कर रही हूँ. शी कम टू मी. एक बात उसने कहा, यार नहीं अमन, तू तो एमबीबीएस कर. और मतलब कि इतना उसने मुझे वो किया, मेरे दिमाग में भी बना दिया. तो उस समय एक नोटिफिकेशन आ गया कि देयर इज अ मैक्सिमम एज टू डू द एमबीबीएस, दैट वाज 25. आई हैव कंप्लीटेड दैट एज. तो एक हो गया कि नहीं यार, फिर अभी रुक गया. बट वो पुश कुछ बना बना रहा, था. वो चीज है. शी लेफ्ट द आर्मी, आई कॉल्ड हर बैक दैट आई एम इन दैट स्टेट नाउ. तो हम्म वो कहता है कि हाँ अमन, तुझे नहीं पता था, हमें पता था कि तुम यहाँ स्टेबल स्टेट में नहीं. And हम्म we are also in the audience, even I can say they are from the chemistry background, surely. So हम्म the stable, to achieve that stable state now, so this is a kind of thing the PV has given me, the stable state, the हम्म stable state of the profession. Now I can say I'm a professional working, balance है मेरा एक चीज का है. So I would love to say thanks to the PV. Mhm. So with this, Aman, just wanted to know that you are into medical writing. So what basically is your role? I would say in non-technical terms, अगर आप समझा सके कि basically the work which you are doing, how it is impacting, patient safety. कुछ non-technical terms में if you can explain. Sure, sure. Actually, when we are coming to the PV line or in हम्म the clinical research line, we are solving the patient without a stethoscope. I can say in a layman language कि हाँ यार, मैं डॉक्टर हूँ,
और मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, मैं स्टेथोस्कोप नहीं पहनता बट मैं पेशेंट्स की हेल्प करता हूँ। जनरली है कि दे आर बेसिकली इन पीवी लाइंस आईसीएसआर केस होता है, जो इंडिविजुअल केस स्टडी रिपोर्ट्स होती हैं, और एग्रीगेट रिपोर्टिंग आती है, medical writing. I worked in narrative and ICSR. In a very short span, I got opportunity to work in a number of fields in PV. Actually, I will love to say thanks to my present company who have given me this opportunity. Actually, in aggregate working, the single case symbol, the word represent, it's an individual case study report. सिंगल जो एक पर्सन का, एक बंदे का, किसी का भी जो केस हुआ, उसको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई सिर्फ हम इस चीज को ये नहीं सिर्फ सकते कि उसकी हम सिर्फ उसकी कोई दिक्कत ही डिस्कस करेंगे, उसके बेनिफिट्स भी अगर उसको हो रहे हैं तो वो इंडिविजुअल केस बन गया है, वो नॉर्मली हम उसको राइट कर रहे हैं। एग्रीगेट क्या है, उन सभी का एग्रीगेट कर लेते हैं जब हम, तो वो एग्रीगेट रिपोर्ट बन जाती है। दे कैन यू कैन से the DSURs, they are developing aggregating report, and papers are there, paper they are submitting only for the USAs, तो वो एग्रीगेट रिपोर्ट बन जाती है। उस एग्रीगेट रिपोर्ट से हम बेसिक जो हमारा क्या था, हम उसको बेनिफिट और रिस्क एनालिसिस करते हैं। ओके। मेन हमारा जो मेन है कि कोई दवा बन रही है, कोई ड्रग बन रही है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके रिस्क को ओवरकम कर रहे हैं कि उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके रिस्क से ज्यादा होने चाहिए। उस चीज को हम ऑथेंटिकली इन लीगल टर्म्स, उस चीज को हेल्थ अथॉरिटीज को शो करना, उस चीज को प्रूफ करके दिखाना एक मेन मेन मेडिकल लेटर का काम हो जाता है। और जनरली मेडिकल लेटर में टू कंपाइल दैट डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को कंपाइल करना, और अकॉर्डिंग टू द कंपनी आई एम वर्किंग इन अ सीआरओ, सो देयर आर क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग उनके डॉक्यूमेंट डिसाइड होते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस लेके उसको कंपाइल करते हैं। मेन मेन क्या है कि हम इन इन जनरल टर्म्स आई एम आस्किंग कि बेनिफिट को और रिस्क को एनालिसिस करना और उसको शो करना कि जो उसका बेनिफिट है उसके रिस्क को ओवरकम करना। Yes, This is the yes. general idea I can say in the PV, and this is the base actually in the PV nowadays, because this is a safety concern first. We are going from the efficacy. Efficacy is just the thing we are providing, and the safety concern is more needed actually. In concern of the vaccination, there is nothing kind of patient I can say. They are the individuals coming out, है ना? So to promote the vaccination, because I'm working with the vaccination part only in the company, so I'm telling this thing because if the individual coming for the vaccination ना, they can't, मतलब कि अगर कोई बंदा उसको कोई बीमारी है तो वो कुछ ना कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार है। उसको हो सकता है कि हाँ यार अगर मुझे इसका ट्रीटमेंट, इफ यू गो फॉर द ट्रीटमेंट टाइम देन यू कैन, ठीक है यार आई कैन ऑप्ट फॉर दैट। बट इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर थिंकिंग फॉर द बेनिफिट काइंड ऑफ थिंग, और वी कैन से प्रिवेंशन काइंड ऑफ थिंग, प्रिवेंशन के लिए जब हम चीज को ले रहे हैं तो वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो उसमें तो हम 1.1001% का चांस नहीं ले सकते, किसी में भी नहीं ले सकते, उसमें तो हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि हाँ इसका रिस्क तो होना ही नहीं चाहिए। तो पीवी ही एक ऐसी लाइन जिससे हम इस चीज को प्रूफ करके, मतलब कि हम कस्टमर को और यू कैन से इंडिविजुअल्स को चीज प्रेजेंट। Yes, yes. So ultimately, a bigger impact is like we are the any product is coming to market, any drug is coming to market. So the benefit should be more as compared to risk, and that we are assessing inside, aggregate reports, benefit and risk analysis we are doing. So with this, Aman, I just wanted to know, like, when you made the shift from your pharmacist job to medical writing pharmacovigilance, then how you prepared for interview at that time? That was I made a shift in 2021 only. 1 year I have tried a number of companies. Frankly, I'm asking, I've tried a number of companies. You can say 1 or 2 interviews I have given, but the base was that I have a gap of 7 years. This is the actually the base was that. So I prepared at a base level of the interview, go with the pharmacovigilance. Sorry, if you go with the fresher interviews for the PV concern, they're not asking for the pharmacovigilance type of thing basically to you. They're going for the pharmacology, and the thing was that for the corporates even, I can say कोई भी corporate है जो वो आपके उस चीज को नहीं देखता है कि आपको नॉलेज क्या है, ठीक है नॉलेज है,
उनका मेन मोटिव होता है कि इस बंदे को हम कितना सिखा सकते हैं, इसमें एब्जॉर्बिलिटी कितनी है इसको। अगर क्योंकि किसी भी आप फील्ड में जा रहे हो, कॉर्पोरेट में, पीवी में जा रहे हो, आपका एक बेस होता है, कॉलेज आपको बेस सिखा देता है, ठीक हम्म है। तो उसमें क्या है कि कंपनी का जो मोटिव होता है कि उसको देखते हैं कि इस बंदे को हम सिखा सकते हैं, इसमें हम्म अब्जॉर्बिलिटी है कि इस चीज को हम एब्जॉर्ब करवा पाएंगे। तो बेसिक थिंग वो हमें शो करनी होती है, तो जो हमने पढ़ा है। कई बार सोचते हैं कि यार हमें क्वेश्चन तो वो फार्माकोलॉजी के पूछ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के पूछ रहे हैं, तो काम तो आना नहीं है, वो नहीं हम्म काम आना है। बट उन्होंने ये आपको ये देखना है कि आपको जो पढ़ाया गया था आपने वो पढ़ा है, ठीक है। हम्म तो अभी वो सच कर सकते हैं कि हाँ यार हम इनको पीडर पढ़ाएंगे। अगर इन्होंने फार्माकोलॉजी पढ़ के आज हमें दिखा दी, तो पीडर पढ़ के भी हमें शो कर पाएंगे। दिस इज द ओनली करेक्ट थिंग आई कैन से। हम्म सो बेसिकली वी हैव टू प्रिपेयर आर बेस नॉलेज जो हमें हम्म फार्मेसी में हम पढ़ रहे हैं, तो उसके हमें गो थ्रू होना चाहिए। वो दैट वाज द बेस टू प्रिपेयर फॉर द फ्रेशर इंटरव्यू। एंड you हम्म can go through the things, you can get to know from internet also what is PV kind of thing. You must be aware about the हम्म terms only, and but you have to the depth knowledge of your subject. हम्म। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। मतलब सब लोग बोलते हैं ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू मेंशन जस्ट नाउ, यू शुड बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स एंड दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड रिफ्लेक्ट Yes, ड्यूरिंग इंटरव्यू। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, यार मेरे को आता सब था, अब सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है मे बी इंटरव्यूअर एक्चुअली थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो दे आर लाइक समझ जाते हैं यार इसको, मतलब नॉलेज तो उसको बहुत है लेकिन ये नई चीज सीखने के लिए ओपन नहीं है। open नहीं। यस, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अमनदीप, यू मेंशन दैट बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स डेफिनेटली, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ लिया, जॉब में आपको नई चीजें सीखनी है, तो यू हैव टू शो दैट एटीट्यूड ड्यूरिंग इंटरव्यू, that then only selection will be easy for you. So Amandeep, with this I just wanted to know that इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो बेसिकली जो हो गया, ठीक है। सो व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन? बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग चैलेंजेस, क्योंकि आप इंडियन आर्मी में सर्व करके आ गए, फार्मासिस्ट वाला रोल डेफिनेटली अलग है, कॉर्पोरेट जॉब से तो बहुत ही डिफरेंट है। वहां पे आप पेशेंट देख रहे थे, लाइफ पेशेंट आपके पास आते हैं, यहाँ पे आपको पेशेंट डेटा से डील करना है। तो इनिशियली व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर कॉर्पोरेट जॉब? I can say, firstly, I can say if the kind of dream you are achieving, तो बहुत से चैलेंज होते हैं, वो आपको चैलेंज लगते ही नहीं है, क्योंकि होता है कि यार एक ड्रीम आपका अचीव हो गया, यू अचीव योर ड्रीम। हाँ, देर आर माइनर आई कैन से द चैलेंजेस आर देयर, यू हैव टू because you are not in front of the patient actually. I हम्म worked around about in 8 or 9 years in front of patients, so there are number of things I can say I'm getting. Uh, 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 I want to dispense, I can say I want to give to the patient because of they are standing in front of me. So that was more easy to dispense and more easy to understand their feelings actually. But now only screen in front of you, हम्म and this is the very much difficult for me, because this will be not more difficult for the person who are directly coming to the first job to the PV. हम्म And I also want to give message in my next one to clear that message also, because the person who are coming directly to the PV now, they are thinking what I'm the job I'm doing. But I want to say seriously from my experience in a HCP line, in a medical line in front of patient, it will be very difficult for your personal life. But you हम्म have weekend, the weekend word ना, एक डॉक्टर के लिए उसके लिए बड़ा बड़ा होता है। वो जो 6 साल 7 साल जब वो हॉस्पिटल में रह के आता है ना, तो दिवाली वीकेंड की ये वर्ड बहुत बड़ा होता है उस चीज के लिए। सो आई विल गिव मैसेज टू द फ्रेशर्स वन ऑल्सो, because you are the luckiest one, you came to the directly to the people. I हम्म can say you are the luckiest one. I can't explain you, because I respect the HCPs who they are giving their time, their families to, and we have seen in the COVID period. Sorry, I'm distracting to my questions actually, to my point actually. No, no, it's Uh, okay, Amandeep. Yeah, go. so I'm distracting to my point actually. The thing was that we have to give lots in when we are working to the healthcare provider kind of thing. So it will be there are, so
if I'm comparison, there are a lot of comparison kind of things that are working. So that pushed me to do. ठीक है Hmm. यार, कोई बात नहीं, I can do out of the patient. Then I got to know that my I'm a small part to serve, to provide the safety to the patient. And one more thing I got pushed that in a HCP environment, in a hospital environment, we are very limited area. But now the sky is the limit. Hmm. In PV, the safety concern you are providing from your knowledge, the limit is sky. Actually, the Hmm. limit is sky. In the whole world, you are providing your safety. You are providing your. So this is the kind of thing boost you. Yeah, no, I can Hmm. do anything. So that will not harsh me to work. But I love to work. I love to work actually. When you come to the comparison kind of thing, na, I have spent my many Diwalis in hospital. I enjoyed there. तो तो व्हेन आई कम टू द प्रैक्टिकल सिनेरियो कि नो आज मैं यार कर रहा हूँ, मैं घर पे बैठ के काम तो कर रहा हूँ ना। Hmm. वो चीज एक और ऐड करना चाहता था पीवी लाइन में आज, क्योंकि देयर सो मेनी थिंग्स एंड इंडियन कल्चर आल्सो, बेसिकली द फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू उनको मुश्किल हो जाता है एक बच्चों के साथ जॉब को Hmm. डिसाइड कर लेना, अपने आप को डिमोरलाइज फील हो जाता है कि नहीं यार मैं कुछ। तो पीवी ने उन मेडिकल प्रोफेशनल को भी बूस्ट कर दिया कि हाँ यार आप भी आके अपने आप को प्रोफेशनल बना। Hmm. there are lot of things I can say by the PV given to the medical profession। तो Correct. वो चीज बूस्ट करती है आपको कि ठीक है Hmm. आप आ रहे हो Hmm. तो आप अभी कर Yes, yes, yes. So don't think कि जो लोग डायरेक्टली पीवी में आ रहे हैं कि यार ये क्या काम कर रहे हैं क्या है, but at a higher level it has a bigger impact और sky is the limit, like Amandeep already mentioned, sky is the limit because बहुत सारी प्रोफाइल है जिसके अंदर आप इस पूरे डोमेन में क्लिनिकल रिसर्च डोमेन के अंदर आप काम कर सकते हो। जैसे अमनदीप इज इन मेडिकल राइटिंग, डेटा मैनेजमेंट इज देयर, एंड प्योर क्लिनिकल रिसर्च आर देयर, क्लिनिकल ट्रायल ऑपरेशंस आर देयर। उसके बाद आप बिजनेस डेवलपमेंट पे भी जा सकते हो, हायर लेवल पे आप बिजनेस डेवलपमेंट पे जा सकते हो, डायरेक्टर लेवल पे, मतलब स्काई इज द लिमिट। सीरियसली बहुत कुछ है, बहुत वेराइटी है एक्चुअली। यू विल नॉट बी डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क इन योर एंटायर जॉब प्रोफाइल, तो वो मोनोटोनस भी नहीं होता है। दूसरी बात है आप कंपनी से कंपनी स्विच कर सकते हो, तो हर कंपनी से आप कुछ नया सीखते हो, हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है। तो या लॉट ऑफ लर्निंग्स आर देयर फ्रॉम क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री। So with this, Amandeep, I just wanted to know what is your biggest learning from the industry, corporate industry, and any regret you have after coming to this industry? my biggest learning was that what I've seen, I'm not compared to the army because army is very much personally. They are Hmm. caring to the very much personally care hota. But in the I worked also in corporate also. So what I've seen in PV industry, in corporate or in the private, I can say they are caring you. They Hmm. आपकी value है. And one more thing I want to add, the biggest thing I want to add actually, we have seen now there is a XYZ company, ABC company. They have how work they have, what they have actually, what they have. They don't have buildings. They don't have any kind of costly land. They have people. They Hmm. have people actually. So tangibly they are proving that people are assets. Hmm. Tangibly they are proving. And the India, I can say in our country, you can say कि बंदे की वैल्यू है ना, जो एक इंसान की जो वैल्यू है वो जैसे आप कहते हैं कि आज जिस कंपनी है इसका इतने 1000 करोड़ वर्थ है, क्या है इनके पास 20,000 लोग हैं। Hmm. इनके पास 20,000 लोग हैं। हमारी कंपनी के पास हमारा क्या है, हमारा सीवी है जो Hmm. हमारी हम उस चीज को है ना, वी आर द एसेट्स एक्चुअली, वी आर द Hmm. एसेट्स, पीपल आर द एसेट्स। हम सुनते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, अब कंपनी के पास कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। द बेसिक थिंग वाज दैट कि हम जो एसेट्स हैं, जो आई कैन से इफ यू वांट टू से दैट द बिगेस्ट लर्निंग आई हैव गेन फ्रॉम पीवी इज कि वी आर द Hmm. tangibly we are the asset. And Correct. regret kind nothing I can say in the presently kind of regret is only we have to promote this thing Hmm. which were not doing so, but I thank to we all want to thanks to Neema. So Thank you. who are promoting this thing actually. So my regret is also covered from you now. There's nothing a regret kind of thing from me. We have to promote that. We have to Hmm. promote that.
we have to go to the colleges, and Mm. nowadays you can say after your matriculation, the persons, if you compare from last 20 years and now, the more they are going to go to the commerce side and the non-medical side, whatever the thing they love to go to the medical, but they Mm. have seen that the no career after the only the one profession is there, yet you Mm. have to become a doctor. This is the only Mm. kind of, but the other things are not get paid actually, not Correct. get that respect, I can say. Mm. Sorry to say, but this is the thing I have seen. Correct. So the PV has given that we have to promote this PV Mm. in a school level also, in a college level also. There is a huge, Correct. there is a sky is a limit for your future. Now you go for the medical line, you can serve the people, Mm. you can earn the money, you will get Mm. the respect from your neighborhood, you will get the respect from your company also. They will care Mm. about you and your family. So we Mm. need to promote this thing. This is a regret I can say. Nothing kind of regret. ओके ओके। अमन, मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है शुरू से। ठीक है, अब मैं वो पूछूंगी कि व्हाई यू डिड एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड नॉट एम फार्मेसी, नॉट एम फार्म? मतलब कि अगर ट्रूली आंसर दूं इसका ना, हाँ। सो देर इज I can say serendipity. Actually, ओके। actually, actually, frankly, I'm asking. हम्म। Apart from my PV career and my army career, I हम्म। was working as vice president in a NGO. In an हम्म। NGO, ओके। working in Patiala. They are serving only for the education of the children, actually. So there is a child. We are serving her from last 15 years, I can say. हम्म। She was in fourth. We started serving her, and she completed bachelor. ओके। Now she told me she's a single girl child of parents हम्म। actually. हम्म। So now she told me that now bhaiya, now I will get married and all. Like no, you have to pursue for the master. No, how I can pursue for the masters? No, मैं I will go. मैं उसकी एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज गया। ओह। Seriously, मैं उसकी एडमिशन करवाने के लिए गया। I got my teachers. Oh, where are you working? I'm working here, and all. But the gossips are things. Why don't you pursue the master? Oh, how? Then I really give my credit seriously to her also, because she shamed me to go there. Na? So my teacher come to me, you have to pursue your masters now. You are going for the for the admission of her. Yes, I came for her admission. No, you have to get admission. Then the thing was that I have discussed with my family. I met with my teachers and they are asking me these things. So I forget to about these things and for all. बट उन्होंने वो बात रख ली, अपने दिमाग में रख ली, एंड दे डिस्कस विद ऑल द थिंग्स। हाँ, आप कह रहे थे कि ये क्या कर सकते हैं, इसको क्या करवा सकते हैं, ये चीज है इसके दिमाग में। देन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस यू दैट दे हैव गिफ्टेड मी दिस थिंग। तो वो चीज थी एक कि हाँ, द आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर एम फार्मा। द हम्म। basic reason was that I want to go for the pharmaceutics and pharma ओके। pharmaceutics, but I have earlier I've told you when I shifted, I joined. It was September, month of September 2018. So the admissions were over. Now I can't think for go for the M.Pharma for 1 year late. Actually, it will be हम्म। more difficult for me to decide all the things at that present. So I got हम्म। admission in a pharmaceutics in sorry in an MSc in pharmaceutical chemistry actually. ओके। So that was a serendipity happen actually. हम्म। So they have gone through my profile and all the things, I got admission and all the things were done. They have gone, you're B.Pharma, na? Yes. Why you going for the biotechnology? Yes, I हम्म। can go. But then they shifted me to the biotechnology. ओके। So I love to say thanks to whole Almighty, because after 3 years of my 2 year I did my bachelor's, I did my master's in biotechnology. After that, I get to know that what was the value of biotechnology. Now I will हम्म। love to say thanks to the biotechnology, because there is a huge kind of things you can say. There are many kinds of things you can learn in biotechnology, and I got a cluster of, I can say, mixture of the pharmacy and the biotechnology. हम्म। So that make me, i'm हम्म। I'm here in the Praxel. I'm here in the working in a company now. This हम्म। is because of my biotech. हम्म।
Throughout from your journey, actually, there is lot of learning parts. Okay, and you've gone through so much of turbulence also. So, as per you, Amandeep, what are the factors which stops any person in making decision and then taking actions? What you think? What could be the factors actually? What stops any person in making decision? Yeah. Because the thing was that now, from my perspective, we don't think so big. Think so Mm, big. Don't go for that. "Oh, what I will prove after 6 years, 7 years." Don't big. I can say don't go for the so long. Think in a minute level. Okay, mm. think big, but for the short term. Not. I want to say that don't go for the long term. Or Long term का maybe decision. हाँ, या और मे बी यू हैव Yes, टू yes, टेक एक्शन वेरी क्विकली, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, yes, हम yes. बहुत बड़ा सोच के हमें लगता है यार For कुछ करना है बड़ा, तो फिर वो उतना बड़ा स्टेप नहीं ले पाते, छोटे छोटे स्टेप्स लो। नहीं, जनरली क्या होता है, हम हम्म। बहुत बड़ा सोच के कुछ कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। हम बहुत हम्म। बड़ा सोच के कुछ नहीं कर रहे हैं वो बहुत बड़ा। हम क्या सोचते हैं कि यार अब मैं कर रहा हूँ, 6 साल बाद इसमें मैं क्या जाऊंगा, होगा या नहीं होगा, फिर मैं उसको छोड़ रहा हूँ। वो चीज नहीं हम्म। होनी चाहिए। यू हैव टू गो। आपको हम्म। वो चीज, अगर आप 10+2 में है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने मेडिकल ले लिया है, मतलब कि एक टाइम अपना 100% उस चीज को दे दो। उसको सोचो नहीं, सीरियसली मत सोचो। आज हम आके उस चीज को सोचते हैं कि यार वो +2 वाले 3-4 महीने थे ना, जो वो सीरियसली पेरेंट्स कहते थे कि यार ये जिंदगी बना जाएंगे। हम्म। सच में वो जिंदगी बनाते हैं, कोई शक नहीं है इस चीज में। हम्म। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बेसिकली कि उस टाइम को, मतलब जो डिसीजन, जो टाइम है ना, उसको उस समय के संभालो। बिकॉज़ टाइम इज मनी। इसमें हम्म। कुछ फैक्टर है ही नहीं है। आज भी आई विल हैव टू थैंक्स टू द पीवी फॉर द बीडीएस ग्रेजुएट, बिकॉज़ दे आर कमिंग एट वेरी अर्ली एज। हम्म। We have to go for the masters, and we came at 24 and 25. They are coming at 21. हम्म। Seriously, the हम्म। time is money. That's why they are growing so. उनको ग्रोथ में मिल रही है, टाइम है। एक टाइम पे जो डिसीजन लेना है ना, उसको ज्यादा नहीं सोचो, उसको हम्म। ज्यादा नहीं सोचो। उसको उसको कवर करो। और एक और चीज होती है आज की डेट में, हम नॉर्मली, हम अगर हम कॉलेजेस की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, हम सोचते हैं कि यार मैं इस जॉब में जाऊं कि ना जाऊं। I think so. You have to think, but this is not the time. You हम्म। have to go for the interview, get selected. Now you think, I will go or not. This is the हम्म। actually time of thinking. आपको सोचना चाहिए, बट हम गलत समय पे सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यार मैं ये वाला एग्जाम है, भरूं के ना भरूं। वो सोचने की जरूरत नहीं है। गो अहेड विद दैट एग्जाम। जब आपके पास 3 एग्जाम क्लियर हुए हों, आपके पास 3 कॉलेजेस हैं, यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, तो आप उस चीज को सोचो कि मैं कहाँ पर जाके लूँ। वी हैव हम्म। टू थिंक। नो, थिंकिंग तो है, बट जो हमारा टाइम ऑफ थिंकिंग है ना, वो कुछ अचीव करने के बाद होना चाहिए। हम पहले सोच के उस चीज को करने से ही रह जाते। तो मैं ये हम्म। कहूंगा कि फर्स्टली गो हेड, और आप अपना बेस्ट दो। कोई भी आप एग्जाम क्रैक कर रहे हैं उसको करो। कोई भी इंटरव्यू के बारे में सोचो, उसको इंटरव्यू को क्रैक करो। उसके बाद उसको सोचो कि मुझे ये ज्वाइन करना है या नहीं। करेक्ट, करेक्ट। और एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करो पहले ही, यस, सोच यस। के लंबा चौड़ा या किसी और के एक्सपीरियंस से। कई बार मुझे लगता है ना मनदीप, जरूरी नहीं है कि एक फील्ड में किसी एक को मजा नहीं आया या उसके लिए वर्कआउट नहीं किया तो दूसरे के लिए भी वर्कआउट नहीं करेगा। हर इंसान अलग होता है, तो जस्ट गो एंड एक्सप्लोर एंड यू यस। कैन लर्न फ्रॉम अमनदीप जर्नी। अभी फार्मेसी में ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी में, फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, नाउ ही इज डूइंग व्हाट ही ऑलवेज वांटेड टू डू। और तो हम तो बायो वाले हैं। हम तो देख रहे हैं कि यार डीएनए किसी का नहीं मिलता, तो किसी की किस्मत किससे क्या मिलेगी यार। हम सच में हमारे लिए वी आर द वन ओनली। हम हमारे जैसा कोई नहीं बना। और करेक्ट। हमारा फ्यूचर भी कोई, हम जो बनाएंगे वो हम खुद ही बना सकते हैं। हमारे तो बल्कि हम तो बायोलॉजी में इस चीज को प्रूव कराए हैं कि डीएनए रिपीट नहीं होता। तो यार मैं कैसे रिपीट हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं नया ही हूँ। मतलब कि मैंने हम्म। कुछ नया ही करके दिखाना ही दिखाना। और एक बंदे में कैलिबर होता है, ये नहीं हम्म। कि नहीं होता। बात हम्म। चाहिए बस। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली। रिपीट नहीं कर सकते, हर हर इंसान यूनिक होता है। हाँ, हमारे तो प्रूफ है। हम तो वो हाँ। अब तो 10-15 साल हो गए ये चीज पढ़ते कि यार किसी का डीएनए किसी से नहीं मिलता। मतलब कि वो तो बायोटेक पे तो हम पढ़ रहे हैं कि हाँ यार हम तो हम्म। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे हैं, किसी से नहीं मिलती यार। तो यार मैं हम्म। किसी से क्यों मिलूंगा।
मुझे करेक्ट भी एक करेक्ट। यूनिकनेस अपनी प्रूव करनी है, मैं अपने आप को एक बार ट्राई तो करूंगा ना, मैं हम्म ट्राई करके अचीव करने के बाद हाँ मेरे पास है तो मैं सोचूंगा कि मैं करना नहीं करना। हम्म। इसलिए मैंने कहा था कि सोचना चाहिए, पर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आके हम सोच के कारण किसी चीज को नहीं कर रहे हैं, वो सोच का कोई फायदा Hmm. Okay, Amandeep. So, with this last question of today's interview, that after coming to corporate industry, did you ever miss going back to army again? नहीं है। Yes. बिकॉज थिंग वाज दैट आर्मी ने I want to say with an example actually. There was Hmm. a get together. I got this job in January 2022, Hmm. and after 8 months, we have a get together with my directors and all the LMs. There, they met. We met actually Hmm. because the virtual platform was there. We interviewed getting virtual. I would get laptop at home only. So first time I met, and after 8 months, a lot of experience. We are casual now. So I asked him, sir, why you have selected? Hmm. So frankly, they have asked me that you have a gap of 7 years, but your army point of view have covered that. And seriously, that I've seen now in my personality. Actually, if I can say, when we are going to the army, now we started career in army. Discipline, how we work in a discipline. Actually, this is the question of us. When we are coming out of the army, na, how you can work without a discipline. मतलब कि एक पर्सनैलिटी आपकी खुद से डेवलप हो जाती है, उस चीज को आप खुद आपको रिस्पेक्ट मिलती है। आई वर्कड ऑन मी फॉर 4 years ओनली, एंड आई नो दैट आफ्टर 4 years नाउ एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग आई आई अलाइव है ना, आई विल गेट द रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर। वो Hmm. चीज मेरे साथ रहेगी ही रहेगी। मैं अभी यहाँ किस कंपनी में हूँ, चाहे जिस मर्जी कंपनी में चला जाऊं, तो एक जो रिस्पेक्ट आर्मी ने बनाई है ना, और उन लोगों ने जो बनाई है, वहां से जो सीखा है एक चीज को, एक चीज बड़ी बेस्ट सीखी है मैंने आर्मी में। मतलब कि आज मेरी पर्सनालिटी इफ यू विल से एनीथिंग टू मी, आई विल नॉट गोइंग टू से नो, ये नहीं हो सकता। आई विल ट्राई, मैं उसको करूंगा। नहीं होगा उसके बाद में आके कहूंगा कि ये हो नहीं पा रहा नीमा। मतलब कि Hmm. दिस इज काइंड ऑफ एटीट्यूड, मतलब कि मुझे आर्मी से ही मिला है। 8 और 8 1 में जो फर्क है ना, वो आर्मी Hmm. सिखा सकती Great, great, great. So actually, even I am from army background. My father was in army. तो मुझे तो आर्मी का ऊपर से नीचे तक पता है। इवन दो आई डिड नॉट सर्व, बट पापा थे तो घर में पूरा माहौल जो था ना, लाइक वो डिसिप्लिन जो आपने बात करी ना, ये है। आपको आपके फॉर एवर लाइफ के लिए इट मेक्स यू अ डिसिप्लिन पर्सन। और जो आपने बोला कि ये कैसे नहीं होगा, आप मतलब पीछे पड़ जाते हो किसी चीज के। वो वाली बात नहीं, होती है, क्योंकि वो वो है, मतलब एक कि वो अलग ही चीज। माहौल होता है। हाँ, अभी भी होता है ना, जब भी मेल, अभी एक टाइम आ गया कि यार ये 2 बजे मेल जानी है, तो मतलब कि एक होता है कि यार इट 2 मीन्स 159 और 2, हम्म तो वो एक दिमाग में वो चीज पता नहीं क्या है। और आपको बताऊं कि वो चीज खत्म भी हो जाती है, तब तक हो भी जाता है कि हम्म नहीं यार ये करना है उस चीज को। वो एक अपने आप आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। आपको कहीं पहुंचना है तो हम्म आपको पता होगा कि आपका ये टाइम है। तो आर्मी ने जो मुझे दिया है ना, वो ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद मास्टर्स की, बट फिर भी मैं एक साल उस चीज में लैग बिहाइंड रहा जॉब लेने में। हम्म एंड फ्रैंकली माय डायरेक्टर टोल्ड मी यार वी हैव चूजन यू बिकॉज़ ऑफ योर आर्मी। तो ओ, आर्मी तो सच में मेरा एक ऐसा हिस्सा बन गया लाइफ का, भूलना तो बात ही नहीं है उसको। मैं कभी थैंकलेस भी नहीं हो सकता कि यार वहां से तो जो मिला है ना, आई विल लव टू से थैंक्स टू द। yes, yes, thanks And to I army, would say a seriously. salute to the all army veterans also, and to the soldiers who are bravely serving us, and that's why we are alive here. Correct. Thanks to Sitting the. with peace here. Yeah, Yes, exactly, yes. exactly. Even I salute to army. Huge respect for army, actually. Okay, so guys, with this, we are going to conclude this interview, and I hope today you have learned a lot of things from Amandeep's journey. Even I learned a lot things that. First of all, please explore तो करो, and don't think पहले ही मत सोच के बैठ जाओ कि क्या होगा क्या नहीं। We already learned a lot from Amandeep's journey today. So much of variety in your profile, Aman, and I seriously liked your profile a lot. So much of variety, and to make this kind of variety, you have to take risks. You have to trust on yourself, and definitely you should be having that courage to take risks.
Yes. So thanks to once again to all of you, to Amandeep, for coming here and sharing your journey. And thanks to audience for listening to this. And again, one more request: please like this video if you like this, and whatever you learned from this interview, you can comment in the comment box also. And please subscribe to our channel. Very soon we'll be coming up with some next video. Very soon we'll be coming up with some next fresh interview. Okay. At last, Amandeep, if you want to mention anything, you can go ahead. I want to say that if you like the video, that's up to you, but must subscribe it because that's good for your professional career actually, and you will be a part to promote and to come the dream of Neema to promote the PV in 1 lakh peoples in this country. So Correct. I would love to say must subscribe this channel to promote to come to share the hands with the dream of Neema. Yeah. Thanks for this, Amandeep. Thanks for these valuable words. And thank you, guys. Thank you. We'll come up soon with some fresh video. Till that time, please stay safe, connected, and healthy. Thank you all. Bye bye.